Good morning, student. We'll begin with lecture number 11, moment of inertia, topic numerical on parallel axis theorem. Today, we'll solve one numerical on T section. In previous section, we have solved I section, L section. Now, we will solve numerical on T section. Here again, you have to find moment of inertia about Ixx and Iy. First, look at the problem. Question 1. Calculate moment of inertia about its centroidal axis of a T section having flange 200 mm into 20 mm and web 250 mm into 25 mm. Overall depth is 270 mm. Here we have to find Ixx and Iy. Till now we have solved many numerical. The process, the steps remains the same. Yes, we have to first find the centroid, that is locate x bar and y bar. Then we have to find moment of inertia about centroidal xx axis, that is Ixx, and third step we have to find moment of inertia about yy axis, that is Iyy, using parallel axis theorem. Only thing differ is the geometry part, that is this T section. Let's see. First we'll draw the diagram. Now the T section part. You look at the diagram in black, in a thick outline. In thick outline we have this. First we have called area 1, then area 2. Area 1 is the flange, area 2 is the web. Area 1, B1 is 200 mm, depth D1 20 mm. Area 2, web B2 25 mm, depth 250 mm. First of all, we have to find y1, y2. After finding y1, y2, then we have to find this location of the centroid. The location of centroid here is given is black G about centroidal xx axis given in black line, horizontal black line, and centroidal yy axis given in a vertical black line, where this 2.8 we have called centroidal G, that is the centroid of the complete T section. G1 is the centroid for the area 1 of the flange. G2 is the centroid for web. So after finding y1, y2, we go for the step 2, wherein we have to find Ixx. In Ixx, it is essential to find h1 and h2. What is h1? Distance between centroid G and G1. So it clearly visible in the diagram. Then we have to find h2, which is equal to y minus y2. It is distance between G and G2. Clearly visible in the diagram on the right hand side in red color. Then we have the base OB, the topmost bottom, or the reference OB, and the leftmost we have the reference OA. Okay, so this is the diagram. I hope this diagram is quite clear to you. Now stepwise we will study it. Given data, let's divide the T section in two parts. हमें सबसे पहले इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऊपर का फ्लेंज पार्ट एक और नीचे का वेब सेकंड पार्ट. उसे हम देंगे वेब या एरिया 1 को रेक्टेंगल नंबर 1. एरिया 1 क्या है उसका? B1 200 mm, डेप्थ D1 20 mm. एरिया A1 B1 into D1 is equal to 20 into 200 4000 square mm. Y1 क्या है? Y1 डिस्टेंस G1 से बेस OB तक. G1 से बेस OB तक. आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पिंक कलर में Y1 दिखाई गया. कितना है Y1? D1 divided by 2 plus D2 is equal to 20 divided by 2 plus 250 is equal to 60. D1 के आधा यानी मिड स्पैन फ्लेंज के सेंटर में है, वो टॉप फ्लेंज सेंटर, वहाँ पे आपका G1 लोकेट है. तो G1 से
OP नीचे तक का बेस का जो डिस्टेंस है वो हमने ज्योमेट्री से फाइंड आउट किया, वो डिस्टेंस है y1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। रेक्टेंगल और एरिया 2 दैट इज वेब सेक्शन। तो हमें वेब सेक्शन का y2 निकालना है, यानी वेब सेक्शन का G2 से लेके बेस OB तक का डिस्टेंस, G2 से लेके बेस OB तक का डिस्टेंस कितना है। डेप्थ आता है उसका D2, उसका आधा यानी 250 डिवाइड बाय 2 125। फाइन, नेक्स्ट। Overall, briefly, we have to find moment of inertia about centroidal x-axis, that is I-x-x, and to find moment of inertia about centroidal y-y-axis, that is I-y-y. Solution क्या है? Step 1 to locate centroid G x bar y bar. Step 2 to find I-x-x. Step 3 to find I-y-y. ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हूँ, ये ब्रीफ में 3 स्टेप्स है। अब एक एक करके हम एक स्टेप धीरे धीरे से सब डिटेल में विद कैलकुलेशन समझेंगे। सॉल्यूशन स्टेप 1। सॉल्यूशन स्टेप 1 टू लोकेट सेंट्रॉइड G x bar y bar, that is to find x bar and y bar with respect to axis OA and axis OB respectively। तो हमें यहाँ पे x bar और y bar फाइंड करना है। अब हमें x बार y बार क्यों चाहिए? क्योंकि G को लोकेट करना है। G सेंट्रॉइड है T सेक्शन का। सबसे पहले हम x बार निकालेंगे। x बार क्या है? डिस्टेंस है सेंट्रॉइड G से लेके वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस OA। अब हमने देखा है कि टॉप फ्लिंज कितना है? B है, B1 है, तो उसका आधा अगर आप देखेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा x बार का। x बार इज इक्वल टू फ्लेंज विड्थ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 mm। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड y bar from the base OB. This we can find using moment area method. So y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 whole divided by a1 plus a2. Substitute the value. a1 is 4000, y bar 260, a2 6250 into y2 125, a1 area 4000 plus 6250. We calculate, we get y bar is equal to 177.68 mm. Next, we have to find moment of inertia about centroidal axis I-axis निकालना है। I-axis क्या है? Moment of inertia of rectangle area 1 plus moment of inertia for rectangle area 2, 1 और 2 दोनों का moment of inertia निकल के ऐड करना है। Using parallel axis theorem, we have to find it. For this, we have to first find h1. h1 is distance between centroid G and G1 in vertical direction. अब डायग्राम देखेंगे तो सेंट्रोइड G और फ्लेंज का सेंट्रोइड G1 ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो h1 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में h1 क्या होता है? दो पैरेलल एक्सिस यानी सेंट्रोइड एक्सिस xx और फ्लेंज का एक्सिस x1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये h1 है। h1 is equal to y1 minus y is equal to 260 minus 177.68 is equal to 82.32. Again, geometry part. h2 is equal to distance between centroid G and G2 in vertical direction. यानी जो T सेक्शन का सेंट्रोइड G है और वेब का सेंट्रोइड G2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्यों चाहिए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में h चाहिए। h है एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस यानी यहाँ पर सेंट्रोइड के x एक्सिस और वेब के x2 एक्सिस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h2 है। h2 is equal to y minus y2 is equal to 177.68 minus 125 is equal to 52.68 mm.
Ixx is given by bd1 d1 cube divided by 12 plus a1 h1 square bracket close plus b2 d2 cube divided by 12 plus a2 h2 square bracket close. Substitute the value put up कीजिए इसमें. Ixx b1 is 200, d1 cube 20 cube divided by 12 plus a1 4000, h1 square 82.32 whole square. Second bracket plus b2 25, d2 cube 250 cube divided by 12 plus a2 6250 into h2 52.68 whole square. You try to solve it. Solve करने के बाद we get the answer. Ixx is equal to 77.131 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is step 2 complete. Now we will move to step 3. Step 3, to find Iyy. That is to find moment of inertia about centroidal y axis. Iyy find करना है. Iyy क्या है? Moment of inertia about y axis for rectangle 1 plus moment of inertia about y axis for rectangle 2. तो दोनों फ्लिंजेस और वेब का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालना है about centroidal y axis. Here again we will use parallel axis theorem. Okay, that is IAB is equal to IG1 plus A1 H1 square bracket close plus next bracket IG2 plus A2 H2 square bracket close. Further ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आगे अगर एलॉबरेट करते हैं तो Iyy1 is equal to ब्रैकेट में d1 b1 cube divided by 12 plus a1 h1 square bracket close plus the next bracket d2 b2 cube divided by 12 plus a2 h2 square. Okay, so next हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में h1 और h2 निकालना है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये डायग्राम में नहीं दिखाया गया है बट हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं. h1 क्या है? सेंट्रॉइड G और G1 के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस. सेंट्रॉइड G कहाँ पे है? सेंटर में जो y एक्सिस है उस पे है. G1 जो सेंट्रॉइड फ्लेंज का है वो कहाँ है? वो भी y एक्सिस है. तो इन दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे है, अलग अलग एक्सिस नहीं है, इसलिए एक ही लाइन पे है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई जैसे हम कहे y1 एक्सिस या y2 एक्सिस ऐसा नहीं है. ठीक है, हमने जब एंगल सेक्शन यानी L सेक्शन देखा था तब हमें दोनों अलग अलग दिखाई दिए थे. x1 1 एक्सिस, x2 एक्सिस और y1 एक्सिस और y2 एक्सिस, क्योंकि वहां कोई सिमेट्री नहीं था. यहाँ सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस, इसलिए सिमेट्री है, दोनों बाजू सेम है, इसलिए सब y एक्सिस पे आ गया. तो आप हमेशा से ध्यान में रखिए कि जहाँ पे सिमेट्री आता है वहाँ पे h1 h2 0 आता है. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आप a1 h1 स्क्वायर या a2 h2 स्क्वायर सीधा h0 आता है तो कंप्लीट वो 0 डाल दीजिए. लेकिन स्टेप्स में लिखिए जरूर. सो Iyy1 is equal to d1 b1 cube divided by 12 प्लस यहाँ a1 h1 स्क्वायर 0 आ जाएगा प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट d2 b2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस यहाँ पे a2 h2 स्क्वायर 0 आ जाएगा. सिंस h1 is equal to 0 and h2 is equal to 0, substituting the value 20 into 200 cube divided by 12, second bracket 250 into 25 cube divided by 12. Solving it and adding it, Iyy is equal to
13.658 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So this is the solution. I hope you understand. Same procedure, same thing. Thank you, student. Any doubt, please ask me.